Hi students, this video is concerned with the topic how the radioactive element gets affected when there's an emission of alpha ray, beta ray, either gamma rays. That means, for example, if there's a radioactive element, it emits alpha ray, either beta ray or either gamma ray. How will these radiations affect on the atomic mass and atomic number of the element, and how will we calculate? After that, I am going also explain to you what is the effect in the position of the new element formed after this radiation, and where that new element is placed in the periodic table, and how will you calculate that. Okay, I am going to start the video. For example, there is a radioactive element X, okay, and it is converted into another radioactive element B. For example, its atomic mass is capital A and atomic number is small a. Okay. Now, when there is an emission of alpha particle, just note it down, its atomic mass is 4 and atomic number is 2. So, when there is an emission of alpha particle, then the new element which is formed because of the alpha particle, it is A minus 4, and it is, for example, this is B and this is B minus 2. So this is when there is an emission of alpha particle. When there is emission of alpha particle. Clear? Now I am going to take one example. For example, there is an element having atomic mass 23 and atomic number 11. Clear? Now there is an emission of alpha particle from this element. Then what is the atomic mass of the and the atomic number of the new element which is formed here? Just 23 minus 4. That means we have 19. That is, just do the minus. 23 minus 4. We have 19. Clear? Now in the atomic number 11 minus 2. That means we have 9. Clear? In this way, the new element which is formed has new atomic mass 19 and atomic number 9. So when there is an emission of alpha particle, there is not only change in the atomic mass but also in the atomic number. The upper one is atomic mass and the lower one is atomic number. Clear? So this is the emission of alpha particle, effect of alpha particle. Now the next one, for example, there is an emission of beta particle. There is an emission of beta particle. Then how does it affect on the new element which is formed there? Okay. Now we are just studying. So when there is an emission of beta particle, then what is the effect on the atomic mass and the atomic number? Beta particle has the atomic mass 0 and atomic number minus 1. So the new element which is formed here has the same atomic mass but its atomic number get added 1. B plus 1. Clear? Similarly here it remains same 23. So when there is an emission of beta particle and it is minus 1, that is 11 minus minus 1, that means 7 minus minus 1, that means it equal to 2. That means one electron is added in the atomic number. Clear? Now what happens when the gamma particle is emitted? It has both atomic mass and atomic number both 0. So there is no change in the atomic mass as well as atomic number. So when there is emission of gamma particle from an element, there is no change neither in the atomic mass neither in the atomic number. I am going to take some examples and don't skip the video, because after that I am also explain to you at which position they are displaced in the periodic table when they undergo during these emissions, alpha emission and beta emission. Now I am going to take some examples, some questions regarding that. Now watch this another question.
in which we have to find the number of alpha particles and beta particles emitted during the process. That means there is an element thorium and it converts into the element lead. And during this process, some alpha particles and beta particles are emitted. And in this case, we have to find the number of alpha particles and the beta particles. So just do simply write 232, that is superscript 232 is equals to 208 plus. In alpha particles we have 4 and it is 2. In beta particles we have 0, it is minus 1. So we have 4x plus 0y. Now solve it. We have 232, 208 and 4x. Y becomes 0. Now 232 minus 208 is equals to 4x. So we have 12 minus 8, 4, that is 2. That is value of x is equal to 4 6 are 24. That means number of alpha particles which are emitted during this reaction is 6. This is the alpha particle. Number of alpha particles, that is the value of x. Clear? Now in order to calculate the number of beta particles, we take the subscripts. So just note it down. Now for that we take the subscript, that is 90 is equal to 82 plus 2x minus 1. Now put the value of x in this reaction equation. We have 82 plus 2 6 are 12 and minus 1. When we calculate this, we can easily get the value of y, and which is the number of beta particles which are emitted during the reaction. So we have 224819 minus y. So y is equal to 94 minus 90 and this is 4. So number of beta particles emitted during this reaction is 4. In this way, these types of questions can easily be solved. Now we have a question in which an element X is converted into element Y, and we have to find how many alpha and beta particles are emitted during this process. As we know, in alpha particle we have atomic mass 4 and atomic mass number is 2. And in beta particle atomic mass is 0 and atomic number is minus 1. So we just make a mathematical equation so that it becomes very easy. It can be written as in this way. This is 84 and it becomes y 206 82 plus p number of alpha particles and q number of beta particles. Clear? Now this is, just consider the superscript. We have 218. Here we have 206 plus 4p plus q into 0, that is 0. So it becomes 218 minus 206 is equals to 4p. So it becomes 2 and 1 is equal to 4p and p is equal to 3. So number of alpha particles which are emitted here are 3 because p is the coefficient of alpha particle. Now see how we will find the number of beta particles. It is also very easy. You just make a mathematical expression. We have 84 which is equal to 82 plus 2 into p and minus q because it is minus 1. Now we have p is equal to 3. Clear? So put the value of p over here. So we have 82 plus 6 minus q. We have 84 is equal to 88 minus q. So q becomes 88 minus 84 and we have 4 beta particles. I think the concept is clear to you now, and I am going to tell you next concept. How will you find the position in the periodic table when an element changes in these types of emissions? Okay. Now for example, if there is a
element X, it changes into element Y, how it affects in its position in the periodic table. For example, there is an element X, it undergoes an alpha emission, that means 4 into 2. So we know in the periodic table is based upon the atomic number. So we just consider the atomic number, 4 into 2. We consider 2. So when an alpha particle is emitted from here, we get 214 and this is 82. Now periodic table is based upon the atomic number. Okay, increasing order of the atomic number. So when there is emission of alpha particle, that element if placed here, it is shifted to 2 places towards its left in case of alpha particle. Clear? So in a period, that element shifted towards its left. For example, if an element is placed in the 5th group, then it comes in the 3rd group. Two groups are shifted. Clear? And in case simply of beta particle, it is -1. That means there is increment of 1 atomic number. So the element shifted towards one right place of the periodic table, towards the right place. If the group number is 5, then it is shifted towards the 6th group. Okay, in this way we can easily find the position of an element when it undergoes beta radiations and alpha radiations. Watch this question on screen. There is an element X, it converted into Y and then it converted into Z. If the group of element X is 5, then what is the group of element Y and what is the group of element Z? When there is emission of beta when it converted from X to Y, and there is an emission of alpha particle when Y converted to Z, and we have to tell the group of Y and Z. Now see how we do it. From X to Y, there is emission of beta particle. So we have 0, -1. So here it is in the 5th group. So write 5th group dash, we don't know this group, and -1 is there. Clear? So when -1 comes over here, so it gets added 5 plus 1. That means this element goes into 6th group. That is the group of Y element is 6. Clear? Now elements Y is in the 6th group, and when it turns into element Z, there is emission of an alpha particle. There is an emission of an alpha particle. So in order to find the groups, we have to consider only atomic number. We have to consider only atomic number because periodic table is based on the atomic number. So we just write the group name of Y, which is 6, and it must be equal to group name of Z plus 2. So what should be added in plus 2 so that we got 6? So when we subtract 2 minus 6, we get 4th group. That means the group number of Z is 4th. So I think it's so easy in order to find that which group the element is positioned if there is a emission of alpha and beta particle. In the next videos, I will also make the videos on the half-life, average life, and all other topics of radioactivity also. So just find out these videos also on my YouTube channel. Thank you. इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि जब किसी पार्टिकल से अल्फा इमिशन होता है या बीटा इमिशन होता है किसी एलिमेंट से, तो जो नया एलिमेंट होता है वो पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में जाएगा या किस पीरियड में जाएगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है एक, तो इसको मैं समझाऊंगी। उसके पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो वो पार्टिकल के ऊपर क्या असर पड़ता है, जब बीटा निकलता है तो क्या होता है।
तो मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है एक्स, वो वाई में बदल जाता है और अल्फा पार्टिकल उसमें से निकलता है। अब आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल में यहाँ 4 होता है और यहाँ 2 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 का डिफरेंस आएगा। तो आप ये देखिए कि जो भी पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस है, एटॉमिक नंबर पे। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है हमारा ग्रुप आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए कि अगर यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपका 16 मान लीजिए, अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया। जब अल्फा पार्टिकल निकल गया तो आपका 16 में से 2 माइनस हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या बचेगा 14। अल्फा पार्टिकल आपका इधर निकलता है, ठीक। सभी तो 14 और 2 मिला के 16 बैलेंस करेगा। तो अब इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे कम है और यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो ये पीरियोडिक टेबल में इसके लेफ्ट साइड पे रहेगी, ठीक। तो यानी इसका जो ग्रुप है वो 6 ग्रुप है। इसका ग्रुप क्या है 6 ग्रुप, क्योंकि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और 6, इसका ग्रुप क्या हो गया 6 ग्रुप। और 14 का आप लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो 2, 8, 4, इसका ग्रुप आपका क्या आ गया 4th ग्रुप। ये देखिए, तो 2 ग्रुप पीछे चले जाएंगे, यानी 2 ग्रुप आप लेफ्ट में चले जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बीटा का केस देखते हैं। बीटा का केस आप देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, ठीक, कोई एलिमेंट है उसमें से बीटा पार्टिकल निकल रहा है। ये देखिए, जब बीटा पार्टिकल निकल रहा है और यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 70। तो ये इसके एक बाद वाले ग्रुप में होगा कि जैसे अगर यहाँ पर x है, आपका जो y होगा इसके बाद हो जाएगा, यानी इसका ग्रुप नंबर 6 है तो इसका ग्रुप नंबर 7। यानी बीटा के केस में आपका ग्रुप नंबर बढ़ता है, ग्रुप नंबर आपका बढ़ता है, इंक्रीज कर जाता है। और अल्फा के केस में ग्रुप नंबर घट जाता है, 2 से यहाँ पर 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसी को बेस लेकर हम ये सवाल करने जा रहे हैं। आप इस सवाल को देखिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे अल्फा या बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं तो उसका पीरियोडिक टेबल की पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा। तो हमारा ये रिएक्शन है कि कोई एक्स एलिमेंट वाई में बदल रहा है, वाई एलिमेंट जेड में बदल रहा है। जब वो एक्स से वाई में जाता है तो अल्फा पार्टिकल निकलता है, वाई से जेड में जाता है तो बीटा पार्टिकल निकल रहा है। जेड आपका 15th ग्रुप में है, तो फिर फाइंड द ग्रुप ऑफ वाई एंड एक्स। हमें वाई और एक्स का ग्रुप निकालना है कि वो किस ग्रुप में है, ठीक है। अब चलिए ये हम निकालने जा रहे हैं। सवाल थोड़ा सा उल्टा करके दिया गया है। आपका दिया गया कि y से z में जा रहा है तो ये बीटा पार्टिकल है, ठीक, और ये 15th ग्रुप में ऑलरेडी है। बीटा पार्टिकल आपका निकल रहा है तो जो z का ग्रुप होगा y के ग्रुप से एक ज्यादा होगा, ये वाला नहीं होगा, मतलब ये वाला ज्यादा है, राइट साइड वाला ज्यादा है। तो आपका ये इसका ग्रुप कौन सा हो गया डायरेक्ट, इसका ग्रुप आपका हो गया 14th। लेकिन अगर y में दिया होता और हमें z का पूछना होता तो हम लिखते 15th, ठीक। अब हमें x से y निकालना है। ये देखिए क्वेश्चन मैंने उल्टा पूछा हुआ है इसीलिए दिक्कत होगी। अब y का ग्रुप आपका क्या हो गया 14th और अब आपका यहाँ पे अल्फा निकल रहा है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है घट रहा है, ठीक। जब इसका एटॉमिक नंबर घट रहा है तो इसका ग्रुप बढ़ेगा, यहाँ पर ग्रुप बढ़ेगा आपका, तो यहाँ पर ग्रुप आपका हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर अल्फा पार्टिकल लिख लो 4 और 2 तो ये आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपने 2 ऐड कर दिया, ये दोनों ग्रुप ऐड हो गए, कितना आ गया 16, तो ये आपका 16th ग्रुप में है। ये आपका किस ग्रुप में है 16। तो आपके पास एक ट्रिक आ गई कि आप यहाँ पे ऐसे बीटा लिख लीजिए 0 - 1, तो 15 - 1 ये क्या आ गया 14, तो ये 14th ग्रुप में है पहला वाला, ठीक है। और ये अल्फा वाला आपका 16th ग्रुप में है।
क्लियर है?